Hello bachcho, so let's see the question. A 1 meter long conducting rod rotates with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. First option is 100 volt, second option is 101 volt, your third option is 102 volt, and fourth option is 103 volt. So let's see the solution. We have this metallic rod whose one end is fixed and it is rotating about this fixed end. Okay, the outer part is in contact with the ring. So suppose this is the ring we have. The outer part is in contact with the ring. Okay, आउटर वाला पार्ट जो है वो इसके कांटेक्ट में है. मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, ये रही हमारी रॉड. ये रॉड रोटेट कर रही है. ओके, नाउ व्हाट आर द गिवन थिंग्स वी हैव. लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन एज 1 मीटर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is given as 400 radian per second. About an axis which is normal to the rod. This axis is normal to the rod. Okay, so this is the axis which is normal to the rod and passing through its one end, right? Now the other end of the rod is in contact. दूसरा end जो है वो एक ring के contact में है. This is the ring we have. Ring के contact में है. Circular metallic ring के a constant magnetic field is given as 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed. So for the rod which is rotating in a uniform magnetic field, we have EMF induced as B ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2. सो जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है वो बनता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2. एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर. बी की जगह 0.5, ओमेगा की जगह 400, लेंथ हमारे पास 1 है, अपॉन 2 कर दीजिए. 2 से ये 200 टाइम्स कैंसिल आउट होगा. सो ईएमएफ कम्स आउट बी नथिंग बट okay, so this comes out to be 5 into 20, or you can simply say that it comes out to be 100 volt. So option number first 100 volt बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे. Okay, so I hope you got the concept of this question. All the very best.